नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जी। Today we shall discuss some MCQs on Security Contracts Regulation Act SCRA 1956. It is a part of syllabus for passing the Social Impact Assessor exam. So this is a part of chapter 11, key regulations, NISM booklet, which start from page number 200. So at least one or two questions comes in the exam from this part. Because this chapter is in the last, students generally not read before attempting the exam. But a small chapter gives you edge in passing the exam, and total at least 4 questions may come from the regulations. So we shall discuss a part 1, Securities Contract Regulation 1956 is an act to prevent undesirable transactions in securities by regulating the business of dealing therein by providing for certain matters connected there. So there are 3 parts कि अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, रेगुलेटेड बिजनेस है जो इसमें होता है उसको रेगुलेट करता है, और कनेक्टेड मैटर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू इस टाइप से बन सकता है, आ सकता है, डिफरेंट टाइप में आ सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके से एमसीक्यूज बन जाएं, सो दैट स्टूडेंट के मन में, एस्पिरेंट के मन में जो एग्जाम देने हमारा है क्लैरिटी आ जाए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह के आए वो टिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पास हो जाएगा। सो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट is an act to prevent undesirable transactions in securities by regulating the business of dealing therein by providing for certain matters connected there. So we are seeing that this is a definition which we have read just before this slide. So answer will be all of the above. Now this question can also be modified like this. Securities Contract Regulation Act 1956 is an act to prevent undesirable transactions in the security, or desirable securities, or unavoidable transactions in the securities, or all of them. So we know that desirable transactions हैं, उसको रोकना कानून का काम नहीं होता है, कानून का मकसद नहीं होता है, और अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन्स का ही होता है। अनअवॉइडेबल ट्रांजेक्शन्स का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है। जब हम पूरी पढ़ते हैं पूरी किताब से तो ये शब्द कोई दिखाई नहीं देता है। सो आंसर, अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन्स इन दी सिक्योरिटीज। सो this is, I am repeating this again, the same definition. Securities Contract Regulation Act 1956, an act to prevent undesirable transactions in securities by regulating the business of dealing therein by providing for certain matters connected therein. क्योंकि इससे ऊपर अलग तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में हैं, तो हम जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। Now, Securities Contract Regulation Act 1956 is an act to prevent undesirable transactions by regulating the business of dealing therein. So, in questions में दो पार्ट इसने कवर किए हैं। So, avoidable transactions और
undesirable transactions, and all of the above. So we know that desirable transactions are permitted, avoidable transactions कुछ होती नहीं है, undesirable transactions को हमें रोकना है, उसको यहाँ नहीं होने देना है. So answer is undesirable transactions in securities by regulating the process of dealing therein. Now, it provides direct and indirect control of virtually all aspects of security trading and the running of stock. तो सिक्योरिटीज के ऊपर, सिक्योरिटी ट्रेडिंग के ऊपर और रनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है और इनडायरेक्ट कंट्रोल. So question may like this: the Securities Contract Regulation Act provides for direct control of all aspects of securities trading, or direct control, और डायरेक्ट और कंट्रोल ऑन कमर्शियल व्हीकल्स. ये बेकार का ही ऑप्शन इसमें डाल दिया है. सो कौन सा? नन ऑफ द अबव. सो वी नो दैट आंसर इज 1 and 2. की डायरेक्ट कंट्रोल, आई एम सॉरी, here answer will be only 1. I shall correct it. You please correct it in your listening, because in second option also direct control है only. So direct and indirect control on running of stock exchanges होना चाहिए. I shall clear it here that here option is 1 only, second नहीं आएगा. Securities Contract Regulation Act provides for direct and indirect controls of all aspects of security trading, direct control on all aspects of security trading, or indirect control. So we know that here direct and indirect control of all securities of securities trading. So different options आ सकते हैं. तो पूरी डेफिनेशन दे सकता है, उसका एक पार्ट दे सकता है, उसके 3 पार्ट को अलग अलग ऑप्शंस में दे सकता है. सो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और फिर कुछ खास मुश्किल नहीं रह जाती है. It gives the central government the regulatory jurisdictions over stock exchanges through a process of recognition and continued supervision, contracts in securities, and listing of securities on stock exchange. So this is a part of NISM booklet study material. तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस टाइप से आ सकता है कि ये सारी की सारी डेफिनेशन 3 पार्ट में दे दी गई है. तो आंसर इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव. वी हैव रेड A, B, C. So the 3 parts are given in MCQ. So all the options are correct. So answer is all of the above. Now, a transaction in securities between two persons is essentially a contract, and this law that specifically applies in the case of a security contract. तो दो लोगों के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रॉमिस, एश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वेश्चन में like this, a transaction in securities between two persons essentially a promise, a contract, an assurance, or all of the above. So answer is contract. So this is from my side on this subject, SCRA. We shall discuss the MCQs, probable MCQs, which may come into the exam on the other subjects also. You can find out that I have also uploaded one video, my experience on the social auditor exam. When I passed the exam, I after that uploaded one video. You can view that also. And if these videos are only for the helping to the students, so you can read maximum and aware about that. तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. नमस्कार. जय श्री राम.